Hello, good morning. In this series of ongoing video lectures, today I am going to teach you Karn Sharir and anatomy of ear. I have divided it into two parts. In the first part, I will teach you Karn Sharir and anatomy of external ear. And in the second part, anatomy of middle and internal ear. So, welcome you all, and let's start the first part, that is Karn Sharir and anatomy of external ear. So Karn Sharir Rachana, that is anatomy of ear. तो सबसे पहले आयुर्वेद में जो कर्ण शरीर रचना का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो है कर्ण प्रमाण। आचार्य चरक ने कहा है कि चिबकोष्ठ कर्णक्षी मध्य नासिका ललाटम चतुरंगुलम। ये चरक नियमासन अध्याय 8 का 117वां श्लोक है, जिसका अर्थ है कर्ण का प्रमाण जो है वो 4 अंगुल है। फिर आचार्य ने कहा कि कर्ण में 2 कर्ण शुष्कली एवं 2 कर्णपुत्रक नामक प्रत्यंग होते हैं। ये चरक शरीर स्थान के अध्याय 7 में वर्णित है। आयुर्वेद मतानुसार कर्ण रोगों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य कर्ण एवं अंतःकर्ण। तो बाह्य कर्ण का निर्माण जो है वो कर्ण शुष्कली से होता है, जो कि तरुणास्थि के द्वारा निर्मित होती है। बाह्य कर्ण का दूसरा भाग जो है वो कर्णपाली है। बाह्य कर्ण से संबंधित भाग कर्णपाली है। कर्णपुत्रिका कर्ण के मध्य में अवस्थित होता है तथा कठोर एवं त्रिकोणाकार होता है। अगर हम कंपैरेटिव दृष्टि से देखें तो कर्ण शुष्कली जो है वो पिन्ना है, और कर्ण पुत्रिका को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेते हैं। फिर कर्ण में स्थित अस्थियां जो हैं, सुश्रुत ने एक अस्थि मानी है, कर्ण में एक अस्थि होती है। ये सुश्रुत शरीर स्थान के अध्याय 55 का 21वां श्लोक में। कर्ण में विद्यमान अस्थि जो है तरुणास्थि प्रकार की होती है। ये सूक्ष्म शरीर स्थान अध्याय 5 का 22वां श्लोक। फिर संज्ञा। आचार्य ने कहा, सुक्षुत ने कहा कि कर्ण में एक संधि होती है, दोनों कर्णों में एक एक संधि होती है। कर्ण में विद्यमान जो संधि है वो शंखावर्त प्रकार की है। उसके पश्चात पेशी। आचार्य सुक्षुत ने कहा कि कर्ण में 2 पेशियां होती हैं। ये अध्याय 5वां का 22वां श्लोक है शारीर स्थान का। फिर मर्म। आचार्य सुक्षुत ने कर्ण पृष्ठो अध संस्कृत विदुरे तत्र बाधेयम्। सूक्ष्म शरीर स्थान अध्याय 6 के 28वें श्लोक में आचार्य कहते हैं कि 2 विदुर नामक मर्म कानों के पीछे और नीचे की ओर रहते हैं। उन पर आघात लगने से बाधिर उत्पन्न होता है। यह स्नायु प्रकार का माम होता है। आचार्य
भागवत ने कहा प्रत्येक कर्ण के पीठ के नीचे स्थिर विदुर नामक एक एक कुल 2 मर्म है, इनमें भेद होने पर श्रवण शक्ति का नाश होता है। ये शारीस्थान अध्याय 4 का 29वां श्लोक है। उसके पश्चात सिराएं। आचार्य सुक्षित के अनुसार कर्ण में 10 सिराएं होती हैं। कण्योदस तसाम शब्द वाहिनी में एक का काम परिहर। ये अध्याय 7वें का 25वां श्लोक है। अर्थात कर्ण में 10 सिराएं होती हैं, इनमें से एक शब्द वाहिनी सिराओं का परिहार करना चाहिए, अर्थात शल्य करते समय इन्हें बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से आयुर्वेद अनुसार कर्ण शरीर का वर्णन समाप्त होता है। अब हमारा सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड है वो है एनाटॉमी ऑफ द ईयर। The ear can be divided anatomically and clinically into 3 parts: the external ear, the middle ear, and internal ear. So in this part we will do anatomy of the external ear. The external ear and middle ears are concerned primarily with the transmission of sound. ये sound को transmission करते हैं. The internal ear functions as the organ of hearing and as part of the balance system of the body. तो इंटरनल ईयर का फंक्शन जो है वो ये हियरिंग का भी काम करता है और बॉडी को बैलेंस बनाए रखने, इक्विलिब्रियम का भी वर्क इंटरनल ईयर का काम है। तो ये ईयर की फिगर है, इसमें एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर को डिस्क्राइब किया गया है। पिन्ना हो गया एक्सटर्नल ईयर में, then auditory canal, इसको external auditory meatus भी कहते हैं, then tympanic membrane, then 3 bones, malleus, incus, stapes, inner ear में semicircular canals, cochlea, vestibule, oval window, round window ये आते हैं, stachyon tube, तो इनका डिटेल आगे करेंगे हम जाके। तो external ear, the external ear consists of the pinna, the external auditory canal, tympanic membrane. Then coming to middle ear, the middle ear cavity with the stachyon tube and the mastoid ear cells is termed as the middle ear cleft. So it involves the following structures: stachyon tube, mastoid cells, then coming to internal ear, it consists of cochlea, vestibule, and 3 semicircular canals. Vestibulocochlear nerve connect the inner ear with the brain. Then details of external ear. First, auricle और पिन्ना। इसमें जो prominent structure है वो है पिन्ना, lobule, helix के opposite anti-helix, then scaphoid fossa, then tragus, tragus के opposite anti-tragus,
इन दोनों में इंट्राट्रैकिक नॉच, देन concha, external auditory meters, acoustic meters, and this is triangular fossa. The entire pinna, except lobule and the outer part of the external acoustic meters, are made up of a framework of single piece of yellow elastic cartilage covered with skin. तो लोब्यूल को छोड़ के पूरा का पूरा पिन्ना जो है वो और आउटर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल acoustic meters ये जो है ये सिंगल पीस ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज के द्वारा बने होते हैं और जो स्किन से कवर होते हैं और जो स्किन है इट इज क्लोजली adherent to the perichondrium on its lateral surface and slightly loose on its medial surface. Epithelium is squamous keratinizing. And adipose tissue is present only in the lobule. Then coming to blood supply of pinna. The anterior surface of the pinna is supplied by branches of superficial temporal artery. The posterior surface is supplied by posterior auricular artery, which is a branch of external carotid artery. Then coming to nerve supply, the upper 2/3 of the anterior surface of the pinna is supplied by auriculotemporal nerve, which is branch of the mandibular division of the fifth nerve, that is trigeminal nerve. And lower 1/3 by the greater auricular nerve. And in the posterior surface, lower 2/3 of the posterior surface of the pinna is supplied by greater auricular nerve. And lower one and upper 1/3 is by greater auricular, lesser occipital nerve. Then coming to external acoustic or auditory canal, it is a S-shaped canal measuring about 24 mm along its posterior wall and extends from the bottom of concha to the tympanic membrane. तो ये concha से लेकर tympanic membrane तक extend होती है और S-shape होती है और इसकी length 24 mm होती है. It is not straight. Its outer part is directed upward, backward, medial, and the inner part is directed downward, forward, medial. इसलिए ये को एग्जामिनेशन करने के लिए हमें auricle is pulled upward, backward, and slightly lateral for the alignment of two parts. Then parts of external acoustic meters. It is divided into two parts. First is cartilaginous, second is bony. Cartilaginous part, it constitutes outer 1/3, that is 8 mm out of 24 mm of the total length of the external auditory meters. This cartilage is continuation with the cartilage forming the framework of pinna. Then second part is bony part. It constitutes inner 2/3, that is 16 mm. The bony canal is lined by skin, which is thin and continuous over the tympanic membrane. Yes, and similar glands are absent in the bony part.
Then relations of external acoustic emitters. Superiorly, it is related to middle cranial fossa, inferior to parotid gland, anterior to temporomandibular joint, posterior masseter and 8 cells and the facial nerve, and medial to the tympanic membrane. Then coming to its nerve supply, oricula-temporal nerve, that is cranial nerve 5th. It is a branch of mandibular division of trigeminal nerve and supplies anterior-superior wall of external acoustic meatus. Second is cranial nerve 10th. Its auricular branch, also called Arnold's nerve, supplies the infero-posterior part of external acoustic meatus. And the third is cranial nerve 7th, that is facial nerve. It innervates the skin of the mastoid and posterior external acoustic meatus. So 5th, 7th, and 10th nerve supply the external auditory meatus at its different parts. Then coming to tympanic membrane or the drumhead. So it is broadly classified into two parts, pars tensa and pars flaccida. This is peripheral part known as pars tensa. It is handle of medial malleus. It is umbo. This is pars tensa, which is responsible for most of the part of the tympanic membrane. And this is cone of light present in the anterior inferior quadrant. Tympanic membrane forms the partition between external acoustic meatus and middle ear. It is placed obliquely or positioned obliquely at forms an angle of 55 degrees with the deep external acoustic meatus. The deep external acoustic meatus is 55 degree का angle बनाती है. Its posterior superior part is more lateral than its anterior inferior part. Its dimensions are height is 9 to 10 mm, width is 8 to 9 mm, and thickness is 0.1 mm. Tympanic membrane, as I told you, is divided into two parts, pars tensa and pars flaccida. First is pars tensa. Most of the tympanic membrane is formed by pars tensa. The important landmarks of pars tensa are: first is annulus tympanicus. Periphery of pars tensa is thickened to form a fibrocartilaginous ring. The annulus tympanicus, which fits in the tympanic sulcus. So it is fibrocartilaginous ring, that is annulus tympanicus. Second is umbo. It is the central part of pars tensa which is tented inwards at the level of tip of malleus. Third is cone of light. A bright cone of light can be seen radiating inwards from the tip of malleus to the periphery in the anterior inferior quadrant. Second part of tympanic membrane is pars flaccida. Pars flaccida is situated above the lateral process of malleus between notch of ravenous and anterior and posterior malleolar folds. It is not so taut and may appear pinkish. Then layers of tympanic membrane. Tympanic membrane have three layers: outer or epithelial layer, inner mucosal layer, and middle fibrous layer.
The nerve supply of tympanic membrane. Auriculotemporal nerve, that is cranial nerve fifth. It is a branch of mandibular division of trigeminal nerve and supplies anterior half of lateral surface of tympanic membrane. Then second is vagus nerve. Its auricular branch, that is a Nord's nerve, supply the posterior half of lateral surface of tympanic membrane. Third is glossopharyngeal nerve. Its tympanic branch. That is Jacobson's nerve supplies the medial surface of tympanic membrane. So fifth, ninth, and tenth nerve supply the tympanic membrane, while fifth, seventh, and tenth supply the external acoustic meters. So a North branch of the vagus nerve supplies both the external auditory meter as well as tympanic membrane. Similarly, auriculotemporal nerve supplies the external acoustic meters as well as tympanic membrane. Uh, let's see here. So fifth and tenth nerves are same as for external acoustic meters, while seventh nerve supplies the external acoustic meters and ninth nerve supplies the tympanic membrane. So these two nerves differ while the two nerves are same. So thank you very much for listening to this lecture. Have a nice day. After a few minutes, I will start the second part of uh, anatomy of ear, which will include middle and external, internal ear anatomy. So up to that, good day. Yeah? Thank you very much.